Hi everyone, welcome to Fishco. In this video, we are going to see about post-harvest technology of fish and fish product, chapter number 2, that is bacteriology. In this series of lecture, I will complete all KK Bhalchandran book with line-to-line explanation. Without any delay, let's get started. So bacteriology is such meaning is that so basically bacteriology term is originated from Greek word bacteriology means bacteria and logy means studying. So bacteria is just small stuff and logy means studying of the something. So the study of bacteria in relation to medicine and agriculture is termed as a fishery. With the agriculture is termed with the fishery. So definition is the bacteriology nothing but study of medicine and agriculture. So in next, we will see about history of bacteriology. History of bacteriology, I would like to tell you small story which is quite interesting here. There was a scientist, his name was Antonian Leeuwenhoek. He came from family of a tradesman. They was not officially scientists. They haven't received a higher education or degree from any university. They knows only one language, that was Dutch. So they could not explain all the things or which discovered all the things in other scientists. So you can say there is also remained as an unfortunate scientist like Mendel's. So what happened once his friend came toward Leeuwenhoek. He was a basically glass maker. सो जो एक एंटावन लिवानुक के पास उनका फ्रेंड आया, वो जो ग्लास मेकर था, लिवानुक को बताया, लिवानुक मेरे पास कुछ ग्लासेस है, आप ये ग्लासेस को आपके पास कुछ देर के लिए रख लीजिएगा. सो और उनके फ्रेंड ने वो ग्लासेस देकर वो चला गया. सो एंटावन लिवानुक ने क्या किया, वो ग्लासेस को उन्होंने लिया, उन्होंने ग्लासेस को अलग अलग कॉम्बिनेशन में अरेंज करवाया. कॉम्बिनेशन में अरेंज करवाने के बाद उन्होंने क्या देखा, ये जो ग्लासेस है जब भी हम एक कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं इसका मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है. सो उन्होंने लाइट पास करवा के देखी, तब ज्यादा मैग्निफिकेशन बढ़ने लगा. सो उन्होंने इस जो स्लाइड्स या हम बोल सकते हैं या मैग्नीफाई या लेंसेस होते हैं, इसको उन्होंने रिशफल करवा के देखा तो मैग्निफिकेशन और बढ़ने लगा. उन्हें पता चला यार हम जब भी रिशफल करते हैं किसी चीज को या किसी लेंस को तो उसका मैग्निफिकेशन है वो बढ़ने लगता है. सो यहाँ से डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोप की. सो उन्होंने क्या किया, इस स्लाइड्स बाकायदा एक क्लोज कंटेनर में या वुडन ब्लॉक में बना कन्वर्ट करके एक माइक्रोस्कोप लेआउट तैयार किया करा. सो उन्होंने उसमें अलग अलग चीजों को देखा, जैसे कि ह्यूमन स्पर्म देखा, प्रोटिस्टा देखा, बैक्टीरिया देखा, फिर इस तरह के अलग अलग चीजों को देखते गए और जो भी चीज वो देखते थे और उनके नोटबुक में वो नोट डाउन करते थे. यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं या स्केच में देख सकते हैं, वो हर चीज को नोट करते थे लाइक इस तरह से. ही पब्लिश हिज ऑब्जर्वेशन इन सीरीज ऑफ लेटर टू रॉयल सोसाइटी. जो भी इन्होंने खुद को जो भी नोटिस किया या खुद को कलेक्ट किया, उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उसको पब्लिश करवाया. द टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय अहरनबर्ग. जो बैक्टीरिया टर्म होता है वो किसी ने दिया, अहरनबर्ग ने दिया. भले ही इन्होंने देखा बैक्टीरिया को बट इन्होंने टर्म उसको अलग तरह से, जैसे कि उन्होंने बताया इसको एनिमल क्यूज, बट एक्चुअल टर्म बैक्टीरिया किसने दिया, अहरनबर्ग ने दिया इन 1829. ये था एंटावन ल्यूवेनहुक के बारे में. एंटावन ल्यूवेनहुक को थोड़ा सा उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उतनी व्याख्याति मिली नहीं एज कम्पेयर टू अदर साइंटिस्ट. सो आदर आगे देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में कुछ पुट फॉरवर्ड किया है वो, और नए साइंटिस्ट थे, वो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अच्छी खासी डिस्कवरी की. वो थे लुइस पास्चर. Louis Pasteur was a genius scientist. He discovered the principle of vaccination. Louis Pasteur is the best known for inventing the process of pasteurization. यहाँ पे कुछ लोगों को like pasteurization actual definition पता नहीं होगा, but I would like to tell the what is the actual is pasteurization. Pasteurization is the process which packaged and non-packaged foods are treated with the mild heat, usually less than 100 temperature. यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम या उससे थोड़ा सा स्लाइटली कम टेम्परेचर पे हम उसको क्या करते हैं, बॉईल करवाते हैं पैक्ड और नॉन पैक्ड फूड फॉर्मेट में. सो लॉइस पास्चर एक ग्रेट साइंटिस्ट थे. दे वर फ्रॉम फ्रेंच.
he disproved the theory of abiogenesis, also disproved the Asian thoughts. He conducted experiment to disprove this. पहले क्या होता था, जो भी प्रीस्ट है, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो टेम्पल या प्रीस्ट या ऐसे जो भी ये ब्रिगेड साइंटिस्ट थे पहले के, जो प्रीस्ट या साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या होता था, ये खुद को जैसे कि अबायोजेनेसिस थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी, इस तरह के बहुत सारी थ्योरी पहले बहुत फेमस थी, बट लुइस पास्टर ने इन थ्योरीज को काउंटर करंट किया, जैसे कि उसको अपोज किया, कि बोला अबायोजेनेसिस थ्योरी ये थ्योरी नहीं है एक्चुअली, कंसेप्ट ये टोटली रॉन्ग है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाए, उन्होंने ऐसे बिलीफ बोल सकते हैं, जो लोग पहले क्या ट्रस्ट करते थे, गॉड ने ह्यूमन क्रिएशन को क्रिएट किया है, तो वो एग्जांपल कैसे देते थे, आप जब भी किसी चीज को रखेंगे, उसमें से नई नए चीज का ये होता है, ह्यूगो डे हैरिस, लॉन मैन, ओल्ड मैन, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अबायोजेनेसिस थ्योरी के बारे में बताया, बट लुइस पास्चर ने उसको काउंटर करंट कर कर अपोज किया। उन्होंने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, जो उसको हम पास्चराइजेशन भी बोल सकते हैं। ही टूक अ स्वैन नेक ट्यूब इन विच ही केप्ट सम मीट ब्रॉथ एंड कुक्ड इट वेल इन दैट ट्यूब। ही फाउंड आउट टू बी नो ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। जब उन्होंने इस बैक्टीरिया इसको ट्यूब को जैसे कि हीट करवाया और उसको रखा, तो उनको बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं दिखी, कंप्लीटली बैक्टीरिया वेर नॉट देयर। सो दे फाउंड आउट टू बी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं दिखी। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने सब लोगों के सामने करवा कर दिखाया, कि बताया कि जब हम एक आदि चीज या मीट ब्रॉथ को हीट करते हैं स्वैन नेक ट्यूब में, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता है। सो यहाँ पे अबायोजेनेसिस थ्योरी डिस्प्रूव हो रही है। तो ये बात लोग मानने तैयार नहीं थे, उन्होंने बोलने लगे लुइस पास्चर आपने कुछ तो घोटाला किया है, या आपने कुछ तो गड़बड़ की है यहाँ पे। सो द पीपल कॉल देम लुइस पास्चर, यू डिड समथिंग रॉन्ग। So Louis Pasteur did something extra to prove that I am true. So they taken that swan neck tube, and then the swan neck tube, the neck of the swan, they cut down, and then they expose that material or meat broth to the environment. Then the bacteria growth started in that tube. So they prove that कि जब भी हम ट्यूब को कट करते हैं, जब भी किसी चीज का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट आता है, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। सो ये चीज लुइस पास्चर ने बताई, और बकायदा उन्होंने अबायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड किया। सो द क्रेडिट of opposing or breakdowning of the abiogenesis theory goes to the Louis Pasteur here. So there is nothing that much important. This is all history about bacteria, and this is not part of K. Bhalchandran book. I'm teaching all these things for the most important thing is that I'm creating basic background or the strong base of the things, because upcoming lecture or in upcoming lectures, in upcoming series of lecture, you will get to know many things. So it's better to learn things now. It's easy for you to learn in future. So let's see about bacteriology. Bacteriology is prokaryotic and eukaryotic. Bacteriology, you can say bacteria divided into prokaryotics and eukaryotics. So here bacteria divided into prokaryotics and eukaryotics. Then if we when we see again, there is this is a prokaryotic bacteria, prokaryotic cell and eukaryotic cell. So I will tell something here. This is a prokaryotic. You can see here the nucleus is primitive type, and eukaryotic nucleus is true nucleus type. So in prokaryotic nucleus is exposed everywhere, and eukaryotic nucleus is concentrated at one place, or it is at a center. So this is somewhat difference. But in upcoming, we will see what is the actual difference in prokaryotic and eukaryotic. So bacteria divided into prokaryotic and eukaryotic bacteria. Prokaryotics are smaller in and eukaryotics are larger. So you can see smaller prokaryotics are smaller, eukaryotic are larger. In this diagram, you can clearly see this larger. So prokaryotics are unicellular and eukaryotic are unicellular and multicellular as well. Prokaryotics are nucleus. In prokaryotics, nucleus is present, and eukaryotics nucleus is present. In both is nucleus, in prokaryotics nucleus absent, in eukaryotic nucleus present. So in nucleus,
consists of single-linked cyclic DNA molecule without nuclear membrane, and the nucleus with multiple chromosomes enclosed in nuclear membrane. That's it. Cell division by binary fission, cell division by mitosis. Here, binary fission is the something in which bacteria divided by method of binary fission. In upcoming lecture, I will explain each and everything in well manner, you can say. But for point of shake, you can see here that binary fission is something. You take an example of the cell. The cell contain bacterial cell divide by binary fission. Parent cell get divided from transverse fission, the septum create, and the one cell is get divide and other cell divide. So like that, two the other, then parent daughter cell divide again and again, they create multiple copies in 20 in 10 to 20 minutes. In case of cell division of mitosis in eukaryotic cell, mitosis is the kind of complicated division. In this division, mitosis take place slowly, you can say. It require 24 hours on an average. It has a different kind of phases in that. So 2n into 2n, it's mitosis, and meiosis into reductional division is there. So example are bacteria and archaea cell. Prokaryotics are example are archaea and bacteria, and eukaryotics are a plant and animal cell. General characters. What are the general characters? Bacteria are microscopic. Prokaryotic bacteria are macroscopic. Some are, you can say, if you take example of other also eukaryotic bacteria, eukaryotic cell, just quoting point, remember here, eukaryotic cell are not macroscopic. Bacteria are specifically macroscopic. The organism consists of single prokaryotic cell and found widely distributed in nature. The organism consists of single prokaryotic cell. You can take organism, any prokaryotic cell found widely distributed in nature. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हर जगह पे मिलते हैं हमें, जहां पे भी जाओ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमें दिखेंगे दिखेंगे। आप एक एग्जांपल में हैंडफुल सॉइल, हाथ भरकर एक मिट्टी हाथ में लो, उसमें आपको नंबर ऑफ और मिलियन ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे देखने के लिए। They are found in all environmental conditions and are present in soil and in nature, waters, pond, lakes, reservoir, and ocean also. ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमें लेक्स में मिलते हैं, रिजर्वेस में मिलते हैं, रिवर्स में मिलते हैं, ओशियन में मिलते हैं, हर जगह पे मिलते हैं, हम जहाँ पे जाएंगे वहां पे। बैक्टीरिया आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊंगा, दे आर फाउंड ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये तो मैंने बता चुका हूँ। बैक्टीरिया आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। जैसे कि यूजफुल बैक्टीरिया हम ले सकते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का एग्जांपल जब लेंगे तो यूजफुल बैक्टीरिया है। और हम जब हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफोमेरियम, देन शिगेला, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हार्मफुल बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं। एंट्रिक डिसीज मींस इंटेस्टाइन में डिसीज कॉज करते हैं। They are involved in decomposition of dead tissue of plant and animals. ये जो होते हैं डिकम्पोजिशन करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स की जो टिश्यू है होते हैं बैक्टीरिया वजह से। और बैक्टीरिया आर यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक फर्मेंटेशन इन मेडिसिन एटीसी। ओके, यहाँ पे हम बताएंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक कि जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में भी ये बैक्टीरिया का यूज होता है। जैसे कि दही बनाते हैं, दैट कर्ड विच मेक एट होम। Then medicines. Nowadays, the digestive medicine are created by the process of fermentation. Different kind of medicine fermentation. Different kind of medicines are created to the bacterial origin. You can say take example of Escherichia coli. Escherichia coli. Then you can take another example, which are that is a Penicillium notatum, the penicillium bacteria. Penicillium bacteria from which we extract, we can create insulin. Like this, there are different kind of bacteria which are used for in day-to-day life for medicine purpose or fermentation, for day-to-day industrial purpose. So next, here we will see about general characters. On the harmful side, bacteria associated with several diseases in man and animals. Yeah, every side have good face, everything have good and bad face. Like that, good bacteria are also there and bad bacteria are also there. So harmful bacteria cause different kind of disease in man animal. Such bacteria are called as pathogen. So ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। almost almost all you can say almost all
you can say almost all food, animal and vegetable origin are decomposed by bacteria unless they are preserved and protected against infection. जब तक कि हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, हर चीज डिकम्पोज हो सकती है बैक्टीरिया की वजह से। वेजिटेबल हम करते हैं कुछ, 2-3 दिन हम वेजिटेबल ला के रखेंगे घर पे, तो दे विल डिस्ट्रॉय डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। एनिमल्स, एक आधे एनिमल डाई हो गए या फिश हम घर में ला के रखते हैं, तो डिकम बैक्टीरिया वजह से, बैक्टीरिया क्या कट अटैक करते हैं फिश के आउटर स्लिम लेयर पे और डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम उसके उस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन या ड्राइंग प्रोसेस, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक दैट, फॉर उसको सेव करने के लिए। दिस इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. This is all about bacteria and their history, their like different stuff. So in this lecture we studied about this. बैक्टीरिया के बारे में आपको कुछ जो इन दिस बैक्टीरिया के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ समझ नहीं आया हो, so you can comment something in comment box. So at the end I have to tell you, be connected with our channel for more videos and information. If you want second part of the video, then go in playlist of our channel. Thank you.